A very good morning, my dear students. We are continuing chapter 6, Attitude and Social Cognition. And in previous video, we just studied about the concept of social cognition. That means the three related terms that is the impression formation, attribution and the attitude. Okay. And today we discuss about the attitude. In previous video, we just understand the concept of attitude and the ABC, which are the components of attitude. And in this video, our next topic is the features which are related to the attitude. So before starting the features, let's discuss attitudes once again. So attitude, that means a set of belief. Attitude is a set of beliefs, or thoughts or you can say the state of mind. The state of mind, okay, regarding some topic. Regarding some topic, which is basically known as attitude object. Okay, जो regarding topics हैं, these are basically known as the attitude object, which have an evaluation features. Which have an evaluative features. Okay, this is the definition. Okay, evaluative features, that means whether it is positive or negative. So this is the typical concept of attitude. Typical definition है ये. After that, there are three basic components: the A, B, and C. A is the affects. B is behavior, and the C is cognition or cognitive, you can say. So this is the A, B, C, जो हमारा मॉडल है या कंपोनेंट है हमारे एटीट्यूड का. So this is the attitude. Let's start discussing the features which are related to the attitude. What are the characteristic of attitude, या कह सकते हैं कि features. So these three are basically component. Let's discuss the features. So our major topic आज का जो start हम जहां से कर रहे हैं, this is the features. So here question is that what is the purpose of an attitude? So we find that attitudes provide a background that make it easier for a person to decide how to act in a certain situation, in a new situation. So for example, our attitude towards foreigners or for foreign country may indirectly provide a mental layout, or you can say the blueprint for the way in which we should behave whenever we meet one. ठीक है. So एटीट्यूड का रोल क्या है, ये क्या पर्पस जो कि सर्व करता है? बेसिकली थ्रू एटीट्यूड वी डिसाइड हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव इन सर्टन सिचुएशन फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल, और यू कैन से द ग्रुप. ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू हम अपना बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहे हैं. So this is the purpose of attitude. Now, in addition to the affective, cognitive and behavioral components, attitude also have other properties, or four significant features of attitudes are. Okay, so let's discussing the features of attributes. These are 4 in number. First is valence. Valence, that means it may be positive or negative.
निगेटिव. ठीक है. सेकेंड इज एक्सट्रीमनेस. Extremeness, that means whether it is high or low. Now, third is multiplexity. Multiplexity, that means either simple or complex. Now the fourth one is centrality. Now again either central या central or in a peripheral. ठीक है, either central or the peripheral. ठीक है. पेरिफेरल की स्पेलिंग गलत हो गई. So these are the 4 features which explain attitude. And आज का ये मेजर टॉपिक है हमारा, इसी हमें एक्सप्लेन करना है बेसिकली. So first of all, फर्स्ट फीचर जो है एटीट्यूड का विच इज वैलेंस. वैलेंस दैट्स मीन हमारा जो एटीट्यूड है किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, वहां पे either it is positive or negative. So this dimension, this feature is basically known as the valence. जहाँ पे जो एटीट्यूड है हमारा ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है. आपने अभी जस्ट पढ़ा कि एटीट्यूड जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट या एक बेस देता है जिसके बेसिस पे हम एक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट. सो ये जो इंफॉर्मेशन का बेस होता है हमारा, ये या तो निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. लेट्स सी अगेन. So the valence of an attitude tells us whether an attitude is positive or negative towards the attitude object. Suppose an attitude, that's mean example लेते हैं. Suppose an attitude say towards nuclear research has to be expressed on 5-point scale, and ranking from 1 that is very bad, then 2 is bad, 3 is neutral, or that means the neither good or neither bad, or 4 is good, 5 is very good. This is the 5-point scale. हमारा statement क्या था? Statement is that means towards nuclear research. ठीक है, nuclear research के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? This is the statement. Now there is a 5 point. First is very low, मतलब very bad, then the bad, then neutral, then good, very good. ठीक है, ये 5 point का स्केल था. सो सपोज अगर इसके टुवर्ड्स हम पब्लिक का व्यू लेते हैं, पब्लिक का एटीट्यूड असेस करते हैं इस क्वेश्चनर के थ्रू. सो इफ एन इंडिविजुअल रेट्स हर और हिज व्यू टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिसर्च as 4 or 5 point, so this is clearly a positive attitude. This means that the person likes the idea of nuclear research and think it is something good. On the other hand, if the rating is 1 or 2, so definitely the attitude is negative. This means that the person dislikes the idea of the nuclear research and thinks it is something bad. So we also allow the neutral attitude. ठीक है, यहाँ पे ये mention नहीं है balance के section पे, but कह सकते हैं कि there is another point which is neutral. ठीक है, so ये एक और point हो सकता है हमारा. So we also allows for neutral attitude, and in this example, neutral attitudes toward nuclear research would be shown by a rating of 3 on the same scale. So our neutral attitude would have neither positive or negative valence. So this is the property of valence जो कि attitude में होती है. Move to the next, that means the extremeness. So as the name says, extremeness, that means extreme. दैट मीन एक्सेसिव हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में है. डिग्री की यहाँ हम बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं. सो द एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हेन वी नो द एटीट्यूड इज पॉजिटिव,
ठीक है, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं. सो व्हेन वी नो द एटीट्यूड इज पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिव, so now next question is the how much positive, ठीक है, और if negative, so how much negative, ठीक है. So the extremeness explain the how much aspect of the attitude. So the extremeness of an attitude indicates how positive or negative an attitude is. And taking the nuclear research example given above, a rating of 1 is as extreme as a rating of 5. So they are only the opposite directions or balance rating of 2 and 4 are less extreme. A neutral attitude of course is lowest on extremeness, ठीक है. So that means जो हमारा ये 5 पॉजिटिव एक्सप्लेन कर रहा है और 4 पॉजिटिव एक्सप्लेन कर रहा है, इन दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस है. That's mean if we are talking about the positive attitude, so definitely the 5 पॉइंट और द 5 जो स्केल का पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर रहा है एक्सट्रीमनेस, जबकि जो 4 है ये लेसर एक्सट्रीम है. if we are talking about the negative attitude, so definitely जो 1 पॉइंट है वो हाईएस्ट और द एक्सट्रीम निगेटिविटी को शो कर रहा है, जबकि जो हमारा लेसर पॉइंट 2 पॉइंट है वो लोएस्ट एक्सट्रीमनेस को शो कर रहा है. एंड द 3 इज द न्यूट्रल पॉइंट. तो यहाँ पे अगेन एक्सट्रीम पॉइंट है डेफिनेटली. सो नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी या मल्टीप्लेक्सिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं. So simplicity or complexity, that means this features refers to how many attitudes there are within a broader attitude. So think of an attitude as a family containing several members. ठीक है, this is the attitude. In case of various topics such as health and world peace, people hold many attitudes instead of single attitude. The attitude system which within us, ठीक है, हमारे जो माइंड में जो एटीट्यूड का सिस्टम है, दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. मल्टीपल एटीट्यूड्स आर देयर एंड मे बी द डायरेक्शन ऑफ द एटीट्यूड आर नॉट टू एटीट्यूड का डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन में हो. दिस इज नॉट नेसेसरी. कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स हैं, ठीक है. तो ये जो सिस्टम है काफी कॉम्प्लेक्स है. सो अ बिगर एटीट्यूड जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जो ब्रॉडर एटीट्यूड है, उसके अंडर इवन बहुत सारे छोटे छोटे एटीट्यूड्स आ सकते हैं. सो डेफिनेटली उनका क्या रोल है ये एक्सप्लेन करता है हमारा सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी. डेफिनेटली जितने ज्यादा एटीट्यूड होंगे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, और अगर लोअर स्केल का एटीट्यूड है, छोटा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, सो डेफिनेटली इट इज अ सिंपल एटीट्यूड सिंपली. So this feature refers to how many attitudes there are within a broader attitude. Think of an attitude as a family containing several members and attitude. So in case of various topics such as health and world peace, people hold many attitudes instead of single attitude. So an attitude system is said to be simple if it contains only one or a few attitudes, and complex if it is made up of many attitudes. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी अब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे क्लास 11th में भी किया, 12th में भी किया. सो क्वेश्चनियर जो हमारा एक मेथड है, टेक्निकल मेथड है जिसके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं, उससे लेके चलते हैं. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द ओपन एंडेड एंड द क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड दैट मीन द लिमिटेड आंसर. We have the choice of answer, but the answer are basically fixed फॉर्म में आंसर्स होते हैं, एंड वी हैव टू ओनली सेलेक्ट द आंसर. ठीक है. एंड इन द ओपन एंडेड देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ आंसर. ठीक है, बहुत तरह के आंसर हो सकते हैं इवन, और हर इंडिविजुअल की उसमें इंडिविजुअलिटी या सब्जेक्टिविटी एड ऑन होगी. सो इन दिस केस ऑल्सो द एटीट्यूड जहां पे ओपन एंडेड है वहां पे वो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ एटीट्यूड्स हो सकते हैं. सो द एटीट्यूड विच इज द पर्सनल प्रॉपर्टी जिसमें पर्सनलाइजेशन हो सकता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड. और जहां पे कुछ यस और नो, राइट और रॉन्ग, इस बेसिस पे मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बेसिस पे अगर एटीट्यूड है जिसका आंसर पॉजिटिव या निगेटिव में आ सकता है, सो दिस इज द सिंपल एटीट्यूड जहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. सो कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स health and well-being. So this attitude system is likely to consist of several members
attitudes. So such as one's concept of physical and mental health, views about happiness and well-being, and belief about how one should achieve health and happiness. By contrast, the attitude toward a particular person is likely to consist of mainly one attitude. So the multiple member attitude within an attitude system should not be confused with the three components described earlier. So each member attitude that belong to an attitude system also has ABC component. Now the last feature is the centrality. Okay, you can understand the multiplexity. There is if the views or the attitudes are in a 2 option or the 3 options, the limited options, there is the attitude is a simple attitude, and when there is a lots of options, lots of complex system, ठीक है, different बहुत सारे ग्रुप का अगर एटीट्यूड है, वहां पे हम किसी फैमिली के मेंबर्स का एटीट्यूड ले रहे हैं किसी पॉइंट पे, so this is the complex attitude, complexity ऐड होना चाहिए. Now the fourth or the next point is the features of attitude is the centrality. So this refers to the role of a particular attitude in the attitude system. There are attitude system, ठीक है, in our minds. So definitely कुछ एटीट्यूड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, जबकि कुछ एटीट्यूड हमारे सिंपल व्यूज हैं जिन्हें हम मे बी चेंज कर सकते हैं. इन ओवर लाइफ स्पैन में हम बहुत सारे एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, बहुत सारे एटीट्यूड चेंज करते हैं. ठीक है, जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, पीपल से हम मिलते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ता है, हम बहुत सारे एटीट्यूड, न्यू एटीट्यूड गेन करते हैं, फॉर्म करते हैं बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, और कुछ एटीट्यूड्स में हमारे चेंजेस भी आते हैं डेफिनेटली. सो जब हम सेंट्रलिटी की बात करते हैं तो हमें ये पूरे प्रोसेस को एक होल वे में, गेस्टाल्ट वे में समझना होगा कि जो एटीट्यूड सिस्टम है हमारा, उसमें लॉट्स ऑफ एटीट्यूड है, बहुत सारे एटीट्यूड है, डिफरेंट इंटेंसिटी के, डिफरेंट वैलियंस के, डिफरेंट एक्सट्रीमनेस के. सो डेफिनेटली जो ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा डोमिनेटिंग, हाईलाइटेड एटीट्यूड है, जो ज्यादा वैल्यूएबल है, दिस इज इन दी सेंटर. ठीक है, वो हमारे सेंटर में आ जाएगा. और जो लेसर, जो वीकर स्ट्रेंथ का एटीट्यूड है, वो हमारे पेरिफेरल होगा. दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, so this refers to the role of a particular attitude in the attitude system. An attitude with greater centrality would influence the other attitude in this system much more than not central, or you can say the peripheral. So attitude would, for example, in the attitude toward world peace, a negative attitudes toward high military expenditures may be present as a core or central attitude that influence all other attitude in the multiple attitude system. That means जो central में आपके attitude है, which is basically your values. ठीक है, हमने values और belief का difference भी पढ़ा attitude से कि किस तरह से ये different है. So when the attitude is a type of attitude which is known as the values, so definitely वो हमारा बहुत ही ज्यादा dominating और हमारा main attitude है. So वो बाकी attitudes को control करेगा. सपोज हमारा जो मेन वैल्यू वाला एटीट्यूड है, जो वैल्यूज है हमारी, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है किसी चीज को लेके, और सपोज हमारे पास और 2 या 3 ऐसे एटीट्यूड्स है हमारे एटीट्यूड सिस्टम में जो निगेटिव डायरेक्शन में. सो डेफिनेटली जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, वो उन सारे एटीट्यूड्स का डायरेक्शन, इंटेंसिटी, रेंज, सभी चीजों को चेंज करेगा टुवर्ड्स दी वैल्यूएबल एटीट्यूड. ठीक है, जो वैल्यू वाला एटीट्यूड है उसके डायरेक्शन में सारी चीजों को चेंज करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा अदर एटीट्यूड्स को. ठीक है, जिसके थ्रू वो उसे चेंज करके अपने साथ मिक्सअप कर पाए. सो दिस इज द you can say the centrality. So there are few attitudes which are in the center of the attitude system and the few attitudes which are in a peripheral, or you can say the ऐसे एटीट्यूड जो कि पेरिफेरल में होते हैं या लेसर इंटेंसिटी, लेसर स्ट्रेंथ के होते हैं. सो दिस इज द सेंट्रलिटी. So these 4 important features of attitude ये हमने डिस्कस कर लिया. नाउ एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट का पोर्शन था आपके चैप्टर में, जो स्टार्टिंग पोर्शन है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड द फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. नाउ हमारा जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है, द एटीट्यूड फॉर्मेशन, देन द एटीट्यूड चेंज. ठीक है, हमने पढ़ा व्हाट इज एटीट्यूड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड. नाउ मूव ऑन टू दी how we learn attitude, how we learn attitude, how we develop our attitude. ठीक है, किस तरह से ये डेवलप होता है, किस तरह से हम गेन करते हैं एटीट्यूड को, किस तरह से हम लर्न करते हैं. ठीक है,
सो दिस इज द एटीट्यूड फॉर्मेशन, जिसे हम बाद में करेंगे. एक बॉक्स 6.1 है विच इज रिमेनिंग. This is basically an example which explain the ABC component at the same time the relationship between these components. ठीक है, ABC component जो एटीट्यूड का हमने अभी डिस्कस किया था वो एक्सप्लेन कर रहा है एट द सेम टाइम क्या रिलेशनशिप है इसमें. ठीक है, और ये किस तरह से कह सकते हैं प्रिडिक्ट करता है हमारे बिहेवियर को ऑन द बेसिस ऑफ अवर एटीट्यूड, वो डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर दैट मूव ऑन करेंगे द एटीट्यूड फॉर्मेशन. I can read the box. Suppose एक एटीट्यूड है या एक पॉइंट हम कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हम जिसको कह सकते हैं वो है ग्रीन एनवायरनमेंट. ठीक है, ये एक पॉइंट है अ ग्रीन एनवायरनमेंट जिसमें हम एबीसी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो सपोज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन योर नेबरहुड स्टार्ट अ ट्री प्लांटेशन campaign as part of a green environment. ठीक है, and green environment movement. So based on sufficient information about the environment, your view towards a green environment is positive. ठीक है, आपके नेबर्स में एक ग्रुप है जिन्होंने ट्री प्लांटेशन का कैंपेन स्टार्ट किया है, एंड थ्रू दिस सफिशिएंट amount of information your attitudes toward the green environment is the positive. ठीक है, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके. सो दिस पॉजिटिविटी शो द कॉग्निटिव कंपोनेंट. ठीक है, दिस एक्सप्लेन द सी फैक्टर. ठीक है, ये जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट इज द सी फैक्टर. ठीक है, ये हमारा सी फैक्टर है, हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट है हमारे एटीट्यूड का. ठीक है, along with the evaluation aspect, you feel very happy when you see greenery and you feel sad and angry when you see trees being cut down. ठीक है, इसी से रिलेटेड ये एटीट्यूड है कि आप जब आप ग्रीनरी देखते हो अपने एनवायरमेंट में, सो यू फील हैप्पी, एंड व्हेन यू आर सीइंग द पीपल, ऐसे पीपल्स को जो कि ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू फील एंग्री और सैड. सो दिस इज द ए फैक्टर अफेक्ट. ठीक है, सो द फीलिंग एस्पेक्ट. ठीक है, और यू कैन से द ए फैक्टर. ठीक है, अफेक्ट. ठीक है, ये जो हमारा है ये ए फैक्टर है. क्या चीज? आपकी इमोशनैलिटी जो इससे रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ पे फीलिंग एस्पेक्ट को हटा देते हैं, एग्जाम्पल का लेके चल रहा है, तो यहाँ पे हम फीलिंग कहेंगे. फीलिंग ऑफ ग्रीनरी, दिस इज द ए फैक्टर. ठीक है, so emotionality or a component of the same attitude. Now suppose you also actively participate in the tree plantation campaign. So this show your the behavior of the B component. This is your act. You are involving in tree plantation. So this show your behavioral aspect. ठीक है, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ट्री प्लांटेशन कैंपेन में, यू आर स्टार्टिंग दी प्लांटिंग द ट्री. सो दिस इज योर बी फैक्टर, योर बिहेवियर, विच इज द एक्ट रिलेटेड फैक्टर. सो दिस शो द बिहेवियर ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड्स टुवर्ड अ ग्रीन एनवायरनमेंट. सो इन जनरल वी एक्सपेक्ट ऑल थ्री कंपोनेंट्स टू बी कंसिस्टेंट विथ ईच अदर. ठीक है, हियर इन दिस एग्जांपल all the three components are basically consistent. That means that towards the same direction. ठीक है, towards the same direction. This is basically known as the consistency between these three. The A, B, and C, these are consistent. है ना? But ऐसा required नहीं है, necessary नहीं है कि हर attitude system में
हर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट जो आपका एटीट्यूड है वो तीनों ही कंपोनेंट में कंसिस्टेंट हो, सिमिलर हो. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट एवरी टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल, it is quite possible that the cognitive aspect of your green environment attitude is very strong, but the affective and the behavioral component may be relatively weaker. ठीक है, हो सकता है कि आपका cognitive part actively involved है, but you are not connected, you are not feeling, you not feel anything about the green environment. ठीक है, and you cannot perform or you cannot act on the basis of green environment or the tree plantation. Okay. So for example, it is quite possible that the cognitive aspect of your green environment attitude is very strong, but the affective and the behavioral component may be relatively weaker. Or the cognitive and the affective component may be strong and positive, but the behavioral component may be neutral. So ऐसा हो सकता है कि आप बिलीव करते हो ग्रीन एनवायरनमेंट में, यू वांट टू मतलब आप प्रमोट कर रहे हो इस चीज को कि प्लांटेशन करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एट द बिहेवियर लेवल. आप जाके खुद प्लांटेशन नहीं कर रहे हो. योर एटीट्यूड इज डेफिनेटली पॉजिटिव, यू आर अफेक्टेड विद दैट. ठीक है, आप अफेक्टेड भी हो, फील भी कर रहे हो, यू आर फीलिंग गुड. जब आप ऐसा कुछ न्यूज चैनल पे देख रहे हो या कहीं आप देख रहे हो कि मोर एंड मोर ट्री का प्लांटेशन हो रहा है, बट स्टिल यू कैन नॉट इन्वॉल्विंग इट. ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. सो दिस इज योर बी कंपोनेंट, जो कि लेसर, वीकर है बेसिकली. So therefore, predicting one component on the basis of the other two may not always give us the correct pictures about an attitude. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सिंपली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो ए बी सी ये तीनों कंपोनेंट हैं ये ऑलवेज हर एटीट्यूड सिस्टम में नेसेसरी हो कि कंसिस्टेंसी हो. ऐसा नहीं हो सकता. मे बी ये फैक्टर ज्यादा हाईलाइटेड हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, और बाकी दो फैक्टर्स जो है वो वीकर हो और जो कि उतने स्ट्रांग ना हो कि वो परफॉर्मेंस लेवल पे आ पाए. ठीक है, सो इन तीनों में इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है. एंड इन फ्यूचर हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के कॉन्सेप्ट्स में थ्योरी भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड. कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी की एक थ्योरी भी पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. सो तब आप इसे बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे. बट नाउ आई थिंक आप मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, सो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कॉन्सेप्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द attitude part. Now move to the next topic, which is attitude formation. ठीक है, so here an important question which psychologists want to find out, that the how attitudes are formed. ठीक है, how we learn the attitude. Because the attitude is very important for our behavior. ठीक है, हमारा सारा बिहेवियर का एक बेसिक ब्लूप्रिंट जो होता है, जो हमें बेस देता है, वो हमारा एटीट्यूड होता है. सो ये एक बहुत ही क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है कि आखिर हम लर्न कैसे करते हैं एटीट्यूड. ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं. हाउ वी लर्न द थिंग्स. ठीक है, सो दिस इज द एटीट्यूड फॉर्मेशन, हाउ वी फॉर्म द एटीट्यूड. So the question, the topic is attitude formation. Okay, so attitude formation, that's mean how we learn attitude. One important question that psychologists are interested in answering is how our attitude formed. Like many other thoughts and concepts that develop and become part of our cognitive system. So attitudes toward different topics, things and peoples also are formed as we interact with others. So however, there are specific conditions that lead to the formation of specific attitude. ठीक है, तो as the same जैसे हम other cognitive components को learn करते हैं थ्रू द इन्वायरमेंट या थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिस तरह से बाकी सारे कॉग्निटिव फैक्टर्स को हम लर्न करते हैं, एज इट इज हम एटीट्यूड्स को भी लर्न करते हैं. एंड बेसिकली ये बहुत ही स्पेसिफिक एटीट्यूड को फॉर्म करने का एक अलग से सिस्टम होता है,
अलग अलग सिचुएशन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं. सो इन जनरल एटीट्यूड आर लर्न थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू इंटरैक्शन विद अदर्स. ठीक है, सो किस तरह से हम एटीट्यूड लर्न करते हैं? बेसिकली टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं. फर्स्ट इज थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस. सो ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एटीट्यूड लर्न करते हैं, एटीट्यूड फॉर्म करते हैं. सेकेंड है हमारा विच इज द इंटरैक्शन विद अदर्स. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा है कि इंटरैक्शन विद अदर्स. जैसे जैसे हम दूसरे इंडिविजुअल से इंटरैक्ट करते हैं, हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है. सो ये सारे फैक्टर्स एक तरह से रोल प्ले करते हैं हमारे एक्सपीरियंस में, एंड थ्रू एक्सपीरियंस बेसिकली हम एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं. सो दिस इज द एटीट्यूड, एंड देयर आर अ फ्यू रिसर्च स्टडीज दैट शो some sort of inborn aspects of attitude, but such genetic factors influence attitude only indirectly along with learning. Therefore, most social psychologists have focuses on the conditions which lead to the learning of attitude. So definitely when here we are talking about the nature and the nurture theory, so definitely the biological part, the genetic part are नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे एटीट्यूड को लर्न के लिए, रादर देन द इन्वायरमेंटल फैक्टर, द सोशल फैक्टर. ठीक है, जो कल्चरल फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो डेफिनेटली हमारा जो कल्चर होता है, जो सोसाइटी होती है, उसके थ्रू हम एटीट्यूड को लर्न करते हैं. सो दिस इज द एटीट्यूड फॉर्मेशन. ओके क्लास, बाकी प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एंड बेसिकली आज का जो वीडियो था वो स्टार्ट हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स A, B, C, affect, behavior and the cognitive component. After that, we just take an example of ABC component, how it is related, the concept of consistency and the inconsistency between these three components. And after that, the factors or the features related to the attitude, that is the valence, multiplexity or extremeness and the centrality. These four features which explain the features of the attitude. This is all about today. Thank you so much, class.